Hello. Hi. Good evening. Welcome to AccuCheck Wealthy. I am very happy and pleased to have all of you here. Thank you so much for joining today's session. Hello, Pandurang ji. Good evening. Thank you so much for joining before time. We really feel happy for all those users who are eagerly waiting कि कब सेशन शुरू हो जाए और कब हम सेशन में एंटर करें. Thank you so much for that. Hello, Mr. Chakravarti. Good evening. Thank you so much for joining today's session. Very happy to have you as a part of AccuCheck Wealthy. Hello, Prakash ji. Good evening. Hello, Pramod ji. Good evening. Hello, Mr. Shrikant Methi. Good evening. Super happy. Thank you so much for joining today's session. Yes, we have a special guest who you can see on the screen who is going to help us understand his journey. He's one amongst you, and we'll know about him a little later. Let's wait for our AccuCheck Wealthy family to join so that we can start today's discussion. Meanwhile, I would love to know what are your plans for the weekend. I think summers are going on all around India in all the regions, all the small parts, all the sections of India. Summers are ongoing. I'm sure you all are enjoying a lot of mangoes, jackfruits, amras, mango milkshakes, and a lot of desserts which are prepared from the special summer foods. I would love to know in the chat section till we start today's session what are the summer specials you all are trying to have this season. Hello, Nayan. Good evening. Thank you so much for joining today. Great. All right. Let's start with today's session. As you all can see, we have a special guest amongst all of you, somebody who is just amongst all of you, an AccuCheck Wealthy member who has been associated with us for last 10 months. I want to take little more time to give brief information about who is he, what great things has he done. But before that, uh, Mr. Harish, congratulations. You are the highest achiever for the month of April 2023, and it gives me immense pleasure that uh, we have invited you here today as a part of the program, and all overwhelmed and happy to host you today. Many thanks. Before I move on to Mr. Harish, sorry, are you saying something? I said many thanks for that. Great. Thank you, Mr. Harish. Before we move on to the further discussion, let me highlight on why is he here? Why is he selected among the 1,20,000 users we have in the AccuCheck Wealthy family? Somebody who has done a drastic transformation in his entire health, weight loss of 23 kgs, blood sugar reduced from 13 HbA1c to currently 5.6%, which is almost pre-diabetic range, to a heavy diabetic almost towards insulin. Weight loss of 23 to 25 kg, which is almost reducing three sizes in your shirts, three sizes in your inches in your pants. Minimum. That's the minimum I am telling you. Plus, he feels mentally stable now. He's physically super active. Looking at him, you cannot guess his age. I can assure you that. Um, Personally, he's inclined towards a lot of official work, and by profession, he is, a technical person who is involved in a lot of, changes in medical, IT, all of these professions, and he has contributed to IT sector a lot. And with all of this routine,
He has also worked on his health and his overall improvement parameters. Hello, Mr. Harish. Warm welcome uh, on behalf of the entire AccuCheck Wealthy family to you. Congratulations for being associated with us. Thank you, Rituja. And I would like to thank AccuCheck, Wellthy Care, as well as Rituja for giving me this opportunity to be part of this session, so that I can do a bit of it and I can enlighten all of you with my experience. So, with that, shall I start my brief introduction, Rituja? Sure, Uh, sure. yeah. Yes, so So, I think all of us need to know that what exactly is your background, a little bit of about yourself, which city you live in, how is your routine like roughly, how busy are you, and how your day begins, and how is your entire journey till now, so that it gives us a brief idea about your basic information. Over to you, Mr. Harish. all right. So first of all, I start with breaking that surprise. My age is 47-year old. Right. I look like 45, 7 or not is a secondary thing. But yeah, I now feel that I look much younger personally. Right. So that is the first surprise I wanted to break. So as far as my background is concerned, I'm a South Indian, belong to Kerala. My native is Kerala, but I'm born and brought up in Delhi. Uh, I have more than 25 years of experience in the IT industry. I've been a seasoned professional and have worked in multiple roles in the IT industry. I have a small family, nuclear family, comprising of a wife, daughter, and a mother-in-law who stay in Delhi, and my parents settled in Kerala. Uh, so about this journey in last 1 year, uh, इसमें जो मैंने I hope everybody is comfortable with हिंदी, तो मैं थोड़ा मिक्स करके बोलूँगा हिंदी और इंग्लिश में. सो जो मेरा लास्ट 9 महीने की जर्नी है, टू बी वेरी फ्रैंक, वो जर्नी मेरी शुरू हुई थी जुलाई 2022 में. इनफैक्ट मैं उससे एक साल पहले जाऊंगा, जब मैंने एक बार टेस्ट कराया था. इट वाज वे बैक इन जुलाई 2021 या जून 2021. उस टाइम पे जब मैंने अपना टेस्ट कराया था, तो आई वाज इन द बॉर्डर लाइन. मेरे को ये पता चला था कि आई वाज having a borderline of I think उस टाइम मेरा HbA1c around 5.6 या 5.7 था. HLD और LLD, SGPT, SGOT सब मेरा बॉर्डर लाइन में था. तो इट वाज आई वाज टेकन ए बैक. बट मेरे को जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि अभी मैं मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ, यू कैन कंटिन्यू विद द लाइफस्टाइल, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल और अपने लाइफस्टाइल को बेटर करो सो दैट यू डोंट हैव टू गेट इनटू मेडिसिन, यू हैव अ टाइम. सो मैंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया. आई वाज वेरी कॉम्प्लिसेंट. मेरा आईटी जॉब था, तो आई वाज काइंड ऑफ वर्काहॉलिक. मैं 15-15 घंटे काम करता था उन Right, दिनों में. एंड आई right, completely into junk foods. मेरे ऑफिस की पार्टीज होती थी, तो आई यूज्ड टू गो देयर एंड हैव ड्रिंक्स आल्सो देयर. सो मेरा completely लाइफ मेस्ड अप था उस टाइम. सो आफ्टर अ ईयर व्हेन आई अगेन टेस्टेड इट, बेस्ड क्योंकि कंपनी ने बोला टेस्ट कराया दोबारा से, हर साल करना होता. सो व्हेन आई गॉट इट टेस्टेड, that gave me a shock of my life. So that was in 2022 जुलाई में जब मेरा रिजल्ट आया, तो आई वाज वेरी शॉक. Came to understand कि it was HbA1c was 13, right? 13 HbA1c था मेरा. और मेरा फास्टिंग शुगर था 325. ग्लूकोज पीपी जो था पोस्ट वाला, वो 552 था. HDL LDL सब हिला हुआ था. ट्राइग्लिसराइड वाज आल्सो हाई. कोलेस्ट्रॉल वाज इन द बॉर्डर लाइन. SGOT SGPT भी काफी हाई था मेरा उस टाइम पे. मैं वेट was 93 kg. So 93 kg से आई रियलाइज कि 93 से जब 89 पे आया मैं, 5 किलोस मेरा रिड्यूस हुआ इंस्टेंटली. तब मैंने रियलाइज किया कि कुछ गड़बड़ है. एंड आई हैड दिस सिम्टम्स ऑफ frequently feeling thirsty, frequent urination, देन आईसाइट थोड़ा मेरे वीक होना शुरू हुआ था. हाथों में कुछ नमनेस सी होने लगी थी मेरे को, और स्लीपलेसनेस होता था मुझे, और आई यूज्ड टू गेट टायर्ड एक्चुअली. सो ये सब फ्रीक्वेंसी सिम्टम्स के साथ में, और जब मेरे सब मैंने देखा कि जब डॉक्टर के पास गया, तो देन आई रियलाइज कि ये इट वाज रियली अलार्मिंग. एंड डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया आप तो यू हैव क्रॉस द लिमिट एक्चुअली. एंड सेम डॉक्टर जो एक साल पहले गया था, उसी ने मुझे ये सब बोला. एंड ही स्कोल्डेड मी अ लॉट कि यार तुम्हें एक साल का मौका मिला था, यू कुड हैव कैपिटलाइज्ड एंड यू कुड हैव अवॉइडेड मेडिसिन, बट अब कुछ नहीं हो सकता, यू हैव टू स्टार्ट द मेडिसिन इन इंस्टेंट.
So that is how the journey of diabetes started for me. Um, and I would, Ritija, you want to have another question for me, or shall I? Sure. Sure, sure. So thank you so much for that introduction and your brief information of what happened exactly a year back. But I want to go a little bit more back and I want to understand exactly how did this start and what was your doctor's first reaction when you saw that your A1C is 13 and when you went to him, did he directly put you on an insulin? He started with combination of medications and insulin, and Sure. exactly what happened if you can go back little, like 10 months, 12 months before, and when the first time it was a shocker for you that I'm on 13%, and what was your doctor's reaction? Sure. Yeah, so it all started, as I said, जुलाई 2021 से ही जब मैं गया था तो मेरा बॉर्डर लाइन था जैसा मैंने बताया था. And even that borderline came because of my hectic work schedule. There was no work-life balance. मेरा लाइफ बड़ा सेडेंटरी हुआ करता था लाइफस्टाइल. कोई एक्सरसाइज नहीं करता था मैं, कोई डाइट को फॉलो नहीं करता था मैं. आई यूज टू हैव लॉट ऑफ जंक फूड. मेरा हाथ हमेशा, मतलब ये कह लो कि आप सुबह शाम, मैं कभी कभी स्विगी से ही खाता था, स्विगी या जोमेटो से सामान मंगा के खाता था. आई वॉज सो जंक फूड, आई वॉज काइंड ऑफ अ फूडी एट दैट टाइम. और Hmm. बाकी मेरा ऑफिस के जो एनवायरनमेंट होता था कि उसमें बहुत सारे पार्टीज वगैरह हुआ करते थे, लाइक बिकॉज ए मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन. सो वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम और डिवोशन जो होता था वो, क्योंकि आई वाज हेडिंग ए एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, या एक तरह से एक अच्छे लेवल पे था मैं. तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे पार्टीज ऑर्गेनाइज वगैरह करने पड़ते थे टीम को मोटिवेट रखने के लिए. तो उस पार्टी के चक्कर में मैं खुद भी यू नो उस फ्लो में मैं खुद भी Involved. बहुत ज़्यादा Right, इन्वॉल्व हो जाता था. correct. सो सेकेंडली आई फेल दैट मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं अपने लाइफ को उस टाइम पे, क्योंकि मुझे ये फील होता था कि दिस इज हाउ द लाइफ इज, एवरीबडी एंजॉय, सो आई शुड नॉट, आई ऑल्सो एंजॉय. सो मैं उससे चलता था ना. आई यूज्ड टू थिंक दैट कि मैं एक स्पोर्ट्समैन था एक कभी ज़माने में कॉलेज के टाइम पे. सो मेरे को कभी बीमारी आ नहीं सकती, यू नो. So that is Absolutely. how I was very complicit, to be very frank, and because of which I came to that stage. जब मैं डॉक्टर के पास गया विथ ऑल दीज सिम्टम्स, तो ही टोल्ड मी कि यार तुम तो एक साल पहले मैं तुम्हारे को बोला था, सेट. ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी अ लॉट कि तुम्हारे पास मौका था एंड यू डिडंट कैपिटलाइज ऑन इट. तो अब जो है कुछ नहीं हो सकता है. इट्स सो हाई कि आपके बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई हुए पड़े हैं, जैसे एच डी एल वगैरह मैं Right. बता आपको. सो ही प्रेस्क्राइब मी दोस मेडिसिन. और स्टार्टिंग के कुछ मेडिसिन ऐसे थे जो कि ड्रास्टिकली शुगर को कम करने के लिए उसने मेरे को दिया. और साथ में इंसुलिन भी दिया उन्होंने मेरे को. इंसुलिन बोला कि वो भी हाई यूनिट्स, काफ़ी हाई यूनिट्स उन्होंने डोसेज मुझे दिया, कि बोला कि ये आपको कम से कम नहीं तो 3 महीने के लिए आपको करना पड़ेगा. एंड ही प्रेस्क्राइब Right. मी, अदर देन दैट ही प्रेस्क्राइब मी एक्सरसाइजेस, कि आपको किस तरह के एक्सरसाइजेस करने हैं. एंड एक्सरसाइज में उसने बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस नहीं किया. उसने मुझे बोला कि आप दिन में सिर्फ आधा घंटा या पौना घंटा निकाल लो, दैट विल बी सफिशिएंट. एंड अदर देन एक्सरसाइज उन्होंने मुझे डाइट प्लान वगैरह भी प्रपोज किया. ये तो तीनों चीज़ें मुझे प्रपोज की. तो एंड दैट वाज अ स्टैंडर्ड आई बिलीव. और मैंने अपने कुछ फ्रेंड से भी पूछा तो उन्होंने भी ये बताया कि यही स्टैंडर्ड होते हैं, तो आप कर सकते हैं. तो आई ट्रस्टेड हिम, और उसको करके मैंने वो शुरू कर दिया वो चीज़. सो दैट वाज हाउ Mhm. दैट दिस एंटायर थिंग स्टार्टेड एक्चुअली. Correct. So let me tell you, I would like to take a minute here, Mr. Gopinath. So let me tell all our AccuCheck Wealthy users, हम जो माइंड में सोचते हैं कि अभी मैं इंसुलिन पे आ गया हूँ, अभी मेरा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या अभी अभी यही लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा जब तक मुझे हार्ट अटैक नहीं होता या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो दिस इज अ मिथ. Let me tell you, if somebody can come from an insulin to just half or one tablet in the day, it is possible for each one of us to work on ourselves and ensure that we reach that stage. पूरी तरह से आपकी टैबलेट मेडिसिन बंद होने में ज्यादा समय लग सकता है. दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इयर्स यू आर डायबिटिक, कितना ज्यादा आपका A1C है, आपकी एज, आपका जेंडर, आपका करंट लाइफस्टाइल रूटीन, ये सारी चीजें भी इसमें मैटर करेंगी. But currently, we need to understand that if we are taking the first step
what we need to work on. If we are taking insulin twice a day, it is our next important job with your coaches to ensure कि वो 2 times का 1 time in a day कैसे हो जाए, या 1 time in a day का tablets पे कैसे आ जाए, tablets का 3 times in a day का 2 times in a day कैसे हो जाए. So we will take one step at a time so that we can work towards it. Thank you so much, Mr. Gopinath. Coming back to you, I Yeah. think this was a very drastic journey, because usually this happens with every educated person who is in a sedentary lifestyle and feels that हाँ मेरे सामने हो सकता है, मेरे फैमिली में हो सकता है, मेरे रिलेटिव्स में हो सकता है, मेरे फ्रेंड्स में हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं हो सकता, Hmm. because I have been eating home food, I have been eating healthy food all my life. So this is a myth. I also want to tell all our users here that it is not necessary कि आप बचपन से हेल्दी खा रहे हैं और 2 साल आप कहीं बाहर रहे तभी आपने अनहेल्दी खाया, तो उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी पे नहीं होगा. Everybody's resistance, everybody's body's ability to take things is on a different level. इसीलिए हम, नहीं तो हम सबको एक ही रूटीन देते, एक ही दवाई देते, एक ही प्लान देते. That would have worked for everyone. But that's not the case. The way your body reacts, the resistance, the willpower your body has is different for each person. All right. Moving on, I think, Harish ji, this is something important, and I really want this to be discussed in this forum here today. So, Yes. there comes a point wherein you feel, abhi bas, enough of this, and I want to start something which will take me down from this insulin or this routine or lifestyle which I'm following. What was that moment which you felt that, yes, now it's time, I need to find a solution, I need to start working on myself. Yeah, it was, to be very frank, it was basically my family's, being upset about all this. जैसे मेरे वाइफ, मेरे डॉटर, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज, सब लोग बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए थे, आफ्टर हियरिंग दैट आई एम बीइंग डायबिटिक। और किसी ने भी ये रियलाइज़ नहीं किया था। इनफैक्ट मेरी वाइफ तो मुझे बोलती रहती थी कि यार इस तरह से जाओगे तो यू विल बी completely devastated and बहुत कुछ हो सकता है आपको। बट दैट वाज़ अ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू डू समथिंग टू बेसिकली टर्न अराउंड एंड ब्रिंग माय लाइफ बैक ऑन ट्रैक। क्योंकि डॉक्टर ने जिस तरह से मुझे बताया, उसने ये बताया कि अब और थोड़ा-सा भी लैप्स आपने किया तो इट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स। उन्होंने मुझे काफ़ी डिटेल में मुझे बहुत सारे इम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस बताए इसके बारे में। एंड टू द एक्सटेंट कि मेरे को अपना शायद लेग भी एम्पुटेट करना पड़ सकता है। आई कैन हैव मल्टीपल Right. ऑर्गन फेलियर्स, वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। एंड इतना मैंने कभी डिटेल में कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। और मैंने घर जाके भी मैंने जब देखा, मैंने यूट्यूब, गूगल वगैरह पे मैंने रिसर्च, आई केम टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी डेंजरस थिंग टू हैव। और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो आई एम डेड। सो मुझे वो करना ही था किसी तरह से। एंड आई रियली थैंकफुल कि मेरे वाइफ वगैरह ने मुझे सपोर्ट किया कि वाइफ और इवन डॉक्टर ने भी स्टार्टिंग में सपोर्ट किया कि यू शुड स्टार्ट एंड हैविंग दीज मेडिसिंस, इट विल बी, यू विल बी इम्प्रूव। बट उन सब में एक ही चीज़ सिर्फ जो मुझे जो नहीं मिला था सेटिस्फैक्शन, दैट वाज अ डाइट प्लान एक्चुअली। तो उन्होंने एक्सरसाइज मुझे ठीक बताया, मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। आई यूज्ड टू वर्क आउट 3 to 4 आवर्स इन द बिगिनिंग इन अ डे। लाइक मॉर्निंग में, इवनिंग में मैंने एक रूटीन बना लिया था मैंने। सो बिकॉज़ ऑफ व्हिच आई स्टार्टेड दैट, तो उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। बट डाइट प्लान मैं उनका फॉलो नहीं कर पाया, बिकॉज़ एक फूडी बैकग्राउंड था मेरा और मुझे वो सब छोड़ के एक ऐसे डाइट प्लान दिया जा रहा था जो कि मैं प्रैक्टिकल नहीं लगा मुझे। तो दैट इज़ व्हेन आई केम अक्रॉस वेल्दी केयर। So I think come to those details in the Great. being very step. Sure, sure. So, thank you, Mr. Gopinath, for sharing that. I think everyone needs to get that moment wherein you feel that enough now. It's just me and my health who have to go in sync, and nothing else should be the priority. And thank you so much for taking that step for yourself
Today, if you yourself will compare your pictures before and after, it will be a drastic journey. I'm Absolutely. sure after a weight loss of 25 kgs, after a reduction of more than 7% A1C from 13% to almost 6% is a great achievement. Thank you so much for working on yourself and taking that first step. All right, moving on. I'm sure that when you came in contact with this AccuCheck Wealthy program, you must have had thoughts in your mind. Should I go for it? Should I not go for it? Is this the right thing for me? Because everything here is virtual. You actually do not see your coaches. You do not meet them like you meet your doctor, or there is no physical connect, or you don't have a clinic where you connect with our team. But everything, whatever we connect, whatever we discuss, whatever suggestions are given, are through a virtual medium of the application. So what was your first instinct when you actually heard about this from a sales manager, and what made you purchase this program and start adhering to your coach? Sure. So yeah, first of all, I was very hesitant actually to enroll with Wealthy Care in the beginning. द रीजन बीइंग कि मुझे लगता था कि शायद वर्चुअल होगा तो कितना ही उसमें अटेंशन मिल पाएगा। और दूसरा मुझे ये हेसिटेंसी थी कि मुझे कोच किस तरह का मिलेगा, किस तरह का मेरे को कंसल्टेशन मिलेगा, वेदर इट विल गो विद द डॉक्टर्स एडवाइस और नॉट, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे एक डाइटिशियन प्रेस्क्राइब किया था। तो मेरे दिमाग में बहुत Right. कुछ चल रहा था। बट समहाउ उन्हीं दिनों में एक्चुअली आई थिंक इट वाज 3 वीक्स सिंस आई वाज डायग्नोस्ड, एंड उन 3 हफ्ते में मैंने रियलाइज किया ये चीज़ कि मेरे जो डॉक्टर ने जो डाइटिशियन प्रेस्क्राइब किया था, जिनके थ्रू मैं उनका एडवाइस लेके मैंने कुछ कुछ शुरू किया था, दैट वाज नॉट वर्किंग आउट एक्चुअली, क्योंकि मेरे बहुत सारे डाउट्स थे। मैं डाउट्स हमेशा पूछता हूँ, मैं डॉक्टर से भी बहुत डाउट्स पूछता हूँ, तो मैं उनसे भी बहुत डाउट्स पूछ रहा था, बट शी वाज नॉट एबल टू आंसर, नॉट इवन आई मीन आंसर दूर की बात है, आई वाज नॉट गेटिंग ए प्रॉपर डाइट प्लान आल्सो फ्रॉम हर। सो मैं बड़ा अपसेट था। तो आई थॉट कि आई ट्राई इट आउट। तो मैंने जब सेल्स वाले से बात किया तो आई वाज वेरी फोकस ऑन द डाइट प्लान ओनली। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे अच्छा डाइट प्लान चाहिए था और डाइटिशियन से कनेक्ट चाहिए था। तो ही प्रॉमिस मी बोथ द थिंग्स, अदर देन दैट ही टोल्ड मी अबाउट द ऐप, जो मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में कि ऐप भी है इसका, Right. Right. और ऐप में इतने फीचर्स होंगे, मुझे ये सब पता ही नहीं था। तो ही बेसिकली गेव मी ए डेमो ऑफ द ऐप, उसके फीचर्स किस तरह के हैं। ही गेव मी इनसाइट अबाउट हाउ आई कैन यूज द ऐप, और उसमें उसके जो ट्रेंड्स आते हैं, जो वेरियस हम ट्रेंड्स उसमें कैप्चर करते हैं, तो उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सब जब उन्होंने समझाया, एंड व्हेन आई हर्ड अबाउट द फीस आल्सो, आई वाज वेरी हैप्पी कि यार ये तो इट्स ए फुल पैकेज व्हिच आई एम गेटिंग फॉर विच ए वेरी फॉर अ वेरी नॉमिनल फीस, एंड आई विल गो फॉर इट। इट्स ए Mm, mm. मैटर ऑफ हेल्थ, तो मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। तो that was how Absolutely. I actually started with it, and by God's grace, I'm very happy that it was a wise decision for me to take it up, and today here I am. So with that, Great. Thank you so much for sharing that. And I'm actually happy to know this, that some people think that when I can't see the coach, I can't follow her. When I can't actually have somebody nudging me constantly. But I think virtually is the best mode of connecting with our users. आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप ट्रेन, बस, घर में एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, एनी टाइम इन बिटवीन यू कैन यूज दिस ऐप. It is not necessary you need to take out time, visit a clinic, meet the coach and come back. So it एक is और on the go. yeah, एक और Yes, चीज जो please. मुझे जो इसमें एक जो चीज अच्छी लगी, जो मेरा कोर फोकस था अपना डाइट प्लान का, Hmm, hmm, द डाइट विच आई रिसीव फ्रॉम माई हेल्थ कोच, इट वाज hmm, वेरी वेरी होमली एक्चुअली। वो बिल्कुल hmm. भी मुझे एग्जॉटिक या फैंसी नहीं था, जो कि मेरे पुराने डाइटिशियन जो मेरे को दे रही थी। इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड इट वाज सो फ्रेंडली दैट कि मैं अपने घर पे आराम से उसको बना के आई कैन ट्राई इट आउट, एंड उसको यूज कर पा रहा था मैं अच्छे से। सो दैट वाज अ ग्रेट रिलीफ फॉर मी। तो वो भी एक एडिशन था जो मिस कर दिया मैंने। Great. Thank you. I think our major thing which we work on is ensuring that everybody takes one step at a time. एग्जाम्पल, अगर आप साउथ इंडियन हो, हमारे प्रोग्राम में हम आपको राइस बंद करने नहीं बोलेंगे. यस,
being a diabetic you can have rice, if like in how much should eat, how, what is the quantity, when should you eat it, with that what other things you should add on, is what we will teach you as a part of this program. All right, moving ahead, Harish ji, we would love to know that I'm sure your family has a very big role to play in your journey of drastic transformation. And how did they help you? What was their role? And how did you approach them to tell them yeah, that you need to work on your health? And I'm sure they are now happy with your medications reduced, your dosage under control, your weight loss, your healthy well being. But how did they help you in this entire 10 months? Yeah, so they had a very major role, Ritija. सबसे पहले तो मेरी वाइफ, तो शी प्लेड ए कॉप इन दिस एंटायर एपिसोड. सो मैं कुछ भी गलत करने की सोचता था या कुछ भी क्रेविंग की वजह से मैं कुछ खाने की भी सोचता था, तो शी यूज्ड टू कम एंड कंप्लीटली स्टॉप एवरीथिंग. वो बोलते थे कि नहीं, एक एक भी पत्ता इधर से उधर नहीं हिलना चाहिए. जो आपको डॉक्टर ने बताया है, जो आपके हेल्थ कोच बता रहे हैं, फॉलो दैट with full integrity. So वो चीज़ में she helped me a lot. So कभी भी मैं कुछ गलत काम करने लगता तो मेरी फेस में मेरे वाइफ का फेस हमेशा मेरे सामने आता है, सबसे पहली चीज़. दूसरा, इन माय विद इन द फैमिली, माय मदर इन लॉ who basically take care of the household food and all for me. So wo with the help of maid and all, she prepares all the delicacies which are prescribed by my health coach. So मुझे उससे काफी रिलीफ मिलता था, बिकॉज टाइमली, सबसे बड़ी जो रिलीफ मिलता था मुझे, टाइमली जो खाना होता था, आई यूज टू गेट इट एंड इन द सेम वे दैट आई वांटेड बेसिकली. सो वो मेरा कभी मिस नहीं होता था. तो मेरा पहले ऐसे रूटीन ही नहीं होता था खाना खाने का. मैं कभी रात को 12 बजे खा रहा हूँ, तो कभी दिन में 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, तो आई वॉज नॉट हैविंग एनी रूटीन. अब मेरा बड़ा फिक्स होता है कि मॉर्निंग 7 o'clock आई हैव माई ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में आई हैव माई लंच, इन बिटवीन आई हैव माई स्नैक्स. एवरीथिंग इज फिक्स नाउ. आई डोंट वांट टू गो हियर एंड देयर. एंड वो टाइमिंग्स को भी मेरे फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हैं. एंड तीसरी चीज, these workouts used to take a lot of time. जैसे I used to work out 3 to 4 hours in the beginning, and now I've reduced it to 2 hours in a day. बट उन वर्कआउट्स में भी वो, दे नेवर बेसिकली इंटरफेयर, उसमें भी अगर कोई इमरजेंसी भी होगा तो वो मैं अटेंड करता हूँ. बट अदरवाइज दे ट्राई एंड सी कि मैं उसको फॉलो करूँ और उसको मैं प्रॉपरली यू नो रूटीन में लेके आऊँ. सो दैट ऑल हेल्प्ड एक्चुअली अ लॉट. सो मुझे फैमिली को आई डेफिनेटली वांट टू गिव ए सैल्यूट. या दिस माय डॉटर एक्चुअली, उसने मुझे मोटिवेट इस तरह से किया कि शी यूज्ड टू टेल मी, पापा यू आर नॉट हैंडसम अदर, लाइक माय अदर फ्रेंड्स पापास. So you have to do something about it. So that is how that also motivated me to basically take it in the positive stride. और मैंने फिर ये किया कि I'll be some one like your friends papa and all. मैं उनकी तरह बन के दिखाऊंगा. And I did, that was a motivation for me to reduce my weight and become more healthy and fit. Absolutely. Thank you so much for sharing that, Mr. Gopinath. You have been using Wealthy Care and AccuCheck Wealthy program for last 9 to 10 months. I'm sure there must be some features, some aspects of the program, the app, which are your favorite. So would you like to share what are the best things as per you which helped you with your transformation? Yeah. So सबसे पहले I would like to say कि ये बहुत easy है navigate करने के लिए. And using the app, I was able to log the daily intake regular basis. जो मेरे पास क्या होता था कि ये लॉग करने का मैकेनिज्म होता नहीं था पहले. तो ये लॉग करके मैं कितना कैलोरी मैं ले रहा हूँ, मैं उसको मैनेज कर पा रहा हूँ. दैट इज वन एस्पेक्ट. दूसरा है कि मैं इसको यूज करके अपने स्टेप्स को मॉनिटर कर पाता हूँ. लाइक मैं कितने स्टेप्स चल रहा हूँ. मैंने अपना टारगेट बना रखा है कि मिनिमम 10,000 स्टेप्स मुझे चलने हैं. राइट, 10,000 स्टेप्स चलने हैं, इतने कैलोरीज मुझे बर्न करने हैं. सो दिस app basically helped me in basically uh, following those target steps on a daily basis. उसके बाद इसके अंदर एक सेक्शन है आपका insights and streaks करके. Again इसमें various, there are various patterns and trends with respect to meals, calorie intake, blood sugar वगैरह सब, और उसमें मैं manage देख पाता हूँ मैं. So वो मुझे help करता है कि मैं track पे हूँ कि नहीं. Again that helps me a lot. उसके बाद एक और जो चीज मुझे अच्छी लगती है इसमें, एवरीथिंग कैन बी सेंट्रलाइज. लाइक आप यू कैन कीप एवरीथिंग देयर. लाइक आपको शुगर लेवल, जो आपका शुगर की रीडिंग्स हैं,
बीपी की रीडिंग्स हैं, आपके लैब के रिपोर्ट्स हो गए, बॉडी का वेट जो मैं कॉन्स्टेंटली चेक करता हूँ. आई कैन कीप एवरीथिंग इन दैट ऐप, एंड आई कैन मॉनिटर दैट कि मेरा क्या प्रोग्रेस चल रहा है इसमें. Then I like what I like about this app is it keeps me sending reminders on various things. जैसे खाना नहीं खाया टाइम से, तो रिमाइंडर भेज दिया. पानी का इंटेक नहीं किया मैंने, पानी नहीं पिया टाइम से, एंड वो सब चीज़ों में मुझे काफ़ी हेल्प मिल रहा है इसके अंदर. Then there is a section for nice, there are some nice articles like magazine shared tab was now. उसमें there are some real life stories and various articles, and that basically also motivate me to keep working on the way I have been doing, and कुछ अगर नया उसमें सीखने को मिलता तो it is very very enlightening actually. And सबसे अच्छा फीचर जो मुझे इसमें लगता है कि I can constantly remain in touch with my health coach. Right. तो चैट फीचर, उस चैट फीचर में मैं कभी भी जैसे नॉर्मल टाइम जो मुझे दिया जाता है उसमें उस विंडो में आई यूज्ड टू गेट गेट होल्ड ऑफ माय हेल्थ कोच, एंड आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम हर, क्लैरिफाई माय डाउट्स. और उसके अंदर चैट हिस्ट्री भी है जिसमें मुझे ये हेल्प मिलता है कि मैं जाके पीछे रेफर करता हूँ उसमें. सो ऑल Hmm. दीज फीचर्स आई फाउंड रियली ग्रेट. देयर आर मेनी अदर फीचर्स आल्सो, बट दीस आर सम ऑफ द फीचर्स दैट आई रियली लाइक. Absolutely. I'm sure um, your health coach has a very important part to play. So maybe if you could give us, see, because first time when you connect, actually following the advice is step 2. Step 1 is understanding and agreeing to the suggestions and whatever changes were suggested, and then comes the next step where you're actually following that and start getting results. So, how was your journey for these two steps? Both were good. In fact, एक चीज पॉइंट मैं एडिशनली ऐड करूंगा. द हेल्थ कोच आई गॉट वाज रियली रियली पेशेंट. क्योंकि मैं कोई भी चीज करने से पहले क्वेश्चंस बहुत पूछता हूँ, तो शी वाज द वन हु यूज्ड टू आंसर एंड क्लैरिफाई एवरीथिंग इन अ लॉजिकल मैनर, कि मुझे वो समझ में आया, मैं उसको फॉलो करता हूँ. जो चीज मुझे समझ में नहीं आता मैं बोलता था कि यार ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मे बी आई नॉट फॉलो. So that way, she was very, very helpful. And talking about the 2 points you said, yes, what I liked about her was, she advised a diet plan which was very easy to manage and readily available at home, as I said, कुछ भी फैंसी नहीं होता था और बहुत ही इफेक्टिव डाइट प्लान होता था. मतलब मैं उसको फॉलो कर पाता था अपने एक्सरसाइज के साथ वगैरह भी. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप आइसोलेशन में एक्सरसाइज करते रहो और डाइट प्लान उस तरह से ना हो, सो इट विल बी बैड फॉर यू. सो वो सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए वो मुझे डाइट प्लान बताता है कि मेरा एज कितना है, मैं कितना एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा कैलोरी इंटेक क्या है, मैं नॉर्मली क्या खाता हूँ, वो सब चीज़ों के बेस पे वो मुझे शी यूज्ड टू गाइड मी. Second aspect is regular calls. Like I used to had regular weekly calls with her. In fact, starting में तो हर दूसरे दिन हमारे calls होते थे, wherein she used to patiently resolve all my concerns. और मेरे को अच्छे से गाइड करती थी, मेरे को अच्छे से मोटिवेट करती थी कि आपको कैसे आपके रूटीन बनाना है. शी हेल्प मी क्रिएटिंग अ रूटीन ऑल्सो इन द एक्सरसाइज, कि मुझे एक्सरसाइज कितने बजे से कितने बजे करना है, क्या एक्सरसाइजेस बेटर है मेरे लिए, और किस तरह का मतलब प्री एक्सरसाइज क्या खाना चाहिए, पोस्ट एक्सरसाइज क्या खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने मुझे हेल्प की. सो एक चीज़ और जो मुझे अच्छी लगी अपने हेल्थ कोच में, वो था नॉट ओनली शुगर, वो मुझे Hmm. ऐसा डाइट प्लान देती थी जो कि मेरे बाकी प्रॉब्लम्स को भी काउंटर करती थी. फॉर एग्जांपल, जो मेरे एलडीएल की प्रॉब्लम थी, मेरे एसजीपीटी की इशू थे, मेरा क्रिएटिन रिलेटेड इश्यूज थे, उसको कंसिडर करते हुए वो डाइट Hmm. प्लान देते थे. ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं उसको बोलता था, वो बोलते थे कि भैया ये आप यूज करना शुरू करो. शी यूज टू टेल मी कि ये इसलिए दे रही हूँ कि इससे आपका एसजीपीटी कंट्रोल में रहेगा, ये इसलिए दे रही हूँ कि क्रिएटिन कंट्रोल में रहेगा. Those aspects she used to cover, so which I really like. Great. And another thing was, जब मैं वेल्दी केयर ऐप के अंदर लॉक करता था कोई अपने उससे जो अपने Hmm. इनटेक और बीपी और शुगर वगैरह, सो वो देखते ही वो कभी कभी मुझे पिंग करके शी यूज्ड टू हैव अ कॉल विथ मी एंड टेल मी कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ और कहाँ मैं सही कर दूँ. सो वो रिमाइंडर्स वगैरह भी वो मुझे Hmm. देती रहती थी बीच बीच में. And seasonal changes के हिसाब से she used to give me a lot of changes in the plan. जैसे अभी समर आया तो समर के हिसाब से उन्होंने मेरा डाइट प्लान चेंज किया, विंटर में अलग डाइट प्लान था मेरा. So she does it proactively, so which I really like. And altogether I will say that she used to motivate me to do better and overcome any fear in my life.
सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो मुझे काफ़ी पॉजिटिवनेस आता था जब आई यूज्ड टू टॉक टू हर। इवन वीकली वन एक कॉल भी होता था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। एंड दीज सेशंस व्हिच यू आर डूइंग दैट इज आल्सो ग्रेट ऋतुजा। तो इसने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया। अदर देन यू नो, एंड हेल्थ कोच ओनली यूज्ड टू गिव सेंड मी इनवाइट्स फॉर दिस सेशंस। तो मैं राइट, इसमें उनको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली जो कि मुझे कभी पता ही नहीं होता था। एंड राइट, आप ढूंढने निकलते हो तो कभी मिलता नहीं है सब चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जो आप दे पाते हैं थ्रू दीज सेशंस। ग्रेट. Great. Thank you so much, Mr. Gopinath. That's really nice of you. Thank you so much for sharing the feedback. Going ahead, I want to actually understand this because I think this is the most important aspect, consistency. I'm sure everyone who's a part of the AccuCheck Wealthy plan agrees to this कि हम एक हफ्ता कर देते हैं, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, maximum 1 month. But when it reaches that bar beyond 1 month, that motivation level or that instinct to do things consistently drops. And that is the reason, after a lot of calls, chats, messages, also, people fail to adhere to what suggestions are given. So, what was your highest motivator, and what made you feel, no, I have to do this consistently every single day? And what were the steps you took which helped you keeping that stability and consistency for every single day? Yes, so the biggest motivation was कि मुझे अपने को डायबिटीज नहीं रखना था। आई वांट टू कंप्लीटली गेट आउट ऑफ इट, राइट। Hmm. Hmm. एंड मेरे को ये था कि मेरी वजह से मेरी फैमिली सफर ना करे। सो दैट इज सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट। सो मैंने अपना रूटीन, जब मेरा डॉक्टर से मुलाकात हुई उसके बाद मैंने अपना रूटीन कंप्लीटली 360 डिग्री मैंने चेंज कर दिया। लाइक मैं पहले कभी सुबह 5 बजे मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था, मैंने बहुत कम देखा है मैंने शायद। सूरज को उगते हुए नहीं देखता था मैं Okay. कभी। So I changed my routine in a way कि I started changing everything that basically impacted me. So सबसे पहले मैंने अपना routine change किया जहाँ पे मैंने सुबह morning I used to get up early in the morning at 4:30 a.m. in the morning. I used to get ready. Right, Like जो हेल्थ कोच ने मुझे प्रिस्क्राइब किया उसके हिसाब से मैंने जो भी मैंने ड्रिंक्स वगैरह लिए हॉट वार्म वाटर के right, साथ में वो सब किया। आई टेक दी यू नो नट्स एंड बादाम वगैरह सब खा लिया मैंने साथ में। देन आई गो फॉर ए right, वॉक। लाइक 5 to 6 मैं वॉक करता था। 6 to 7 मैं आपका प्राणायाम या योगा जैसा करता था रूटीन में। एंड आफ्टर दैट कमिंग बैक, गेट रेडी, डॉक्टर को छोड़ना है, स्कूल छोड़ना है, वो सब करके वापस आके आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस। And in the evening again, I used to go for. In fact, in the afternoon also after lunch, I used to have an half an hour sort of a stroll. वो ऑफिस में मैं कर लेता था। और शाम को आने के hmm, बाद भी मैं 6-7 बजे करीब 1 घंटे का एक वॉक कर लेता था। तो इन टोटल मैं 2-3-4 घंटे तक का मैं वर्कआउट पहले करता था स्टार्टिंग में। अब रिड्यूस दैट बिकॉज अब मुझे लगा कि मेरा वेट भी ज़्यादा रिड्यूस हो रहा था। आई वांटेड टू अवॉइड दैट एक्चुअली। सो वो मेरा रूटीन जब बना और साथ में मेरा डाइट प्लान जो कि मेरा हेल्थ कोच मुझे hmm, दिया था, मैं उसको भी फॉलो करने लगा। सो बोथ दीज कॉम्बिनेशन टुगेदर हेल्प मी लॉट। एक चीज कभी भी अकेले नहीं चलता। लाइक आप एक्सरसाइज करते रहो और आप साथ में प्रोटीन इंटेक ना करो, वो नहीं हो सकता। So it has to be balanced, right? आप exercise करो तो I used to have lower carb of food intake. I used to have high protein, high fiber sort of a intake, जिससे कि वो balance कर लेता था मैं। मेरा weight जब right, मैं आपको weight का एक जर्नी बताऊं तो I was 93 when I was diagnosed. 5 kilos मेरा अचानक से कम हुआ because of diabetes, which was very right. I was very happy and I was very shocked also कि ये हुआ कैसे, हो कैसे गए। But anyway, that I Right. came to understand कि And that बीमारी was की। not healthy weight. Yeah, that is not a Right, right, healthy lose. So जुलाई में जब मेरा वेट 93 से 89 आया तो उसके बाद जब मैं 3 महीने मैंने वर्कआउट किया, उसमें मैंने पूरा अपना एफर्ट डाला कि मेरे को 3 महीने में अपने आप को काफी रिड्यूस करना है। सो वो 89 से मेरा वेट रिड्यूस होके मेरा हो गया था आपका ऑलमोस्ट 85 किलो। और उसके बाद मेरा okay, 85 किलो मेरा हुआ था उसके अंदर। दैट वाज इन दी अगस्त में। और उसके अंदर मेरा okay, जो आपका क्या कहते हैं, खाली वेट नहीं, मेरा आपका HbA1c वगैरह भी मेरा वहाँ पे काफी रिड्यूस होगा। 13.0 से मेरा शायद 6.1 या 6.5 कुछ मेरा आ गया था उसके अंदर। एंड उसके बाद फिर मैं एवरी क्वार्टर आई यूज टू रिड्यूस 5 किलोज। जो मैंने टारगेट बनाए थे मुझे 5 किलोज एवरी क्वार्टर रिड्यूस करना है। एंड एट ए पॉइंट जब मैं 70 पहुंच गया तो मेरे डॉक्टर ने और मेरे हेल्थ कोच ने बोला कि और रिड्यूस मत करो अब, क्योंकि वो right. रिड्यूस करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सो Enough for your height. हाँ, सो थोड़ा सा डाइट पे थोड़ा सा आप थोड़ा सा लिवरेज दे दो।
ताकि ऐसा भी ना हो कि आपका वेट पूरा ही घटिया नीचे चला जाए और हाइपर ग्लाइसीमिया जैसा कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाए। सो दैट वे हम्म। ऑल्सो आई यूज टू मैनेज इट। सो अब मेरे पास अब ये रहता है कि मैं वेट ज़्यादा रिड्यूस भी ना करूँ, मैं उतने पे रहूँ, और मैं डाइट भी इस तरह से मैनेज करूँ कि इट बैलेंस इट आउट। सो ये दोनों हैंड इन हैंड काफ़ी हेल्प किया मुझे इसमें। Great. Thank you for sharing that. Cravings are very important when it comes to managing your food, your diet, your diabetes. So I'm sure you must be a fan of junk food, sweets, tasty preparations, fried food. So how did you manage this in this entire 9 to 10 months journey? Did you have your cheat meal days, or did you just plan as per your achievement कि मेरा इतना कम होगा, वेट इतना, A1C कम होगा तो मैं ये खाऊंगा? Did you tag it to a goal, or यस। how do you control on your cravings? सो शुरू के 3 महीने में तो ऋतुजा आई डिडंट टच एनीथिंग। मैं जो हेल्थ कोच बोलता था मुझसे, मैंने उसको फॉलो किया ब्लाइंडली। Okay, क्योंकि मैं आई आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक मोर रिस्क। तो मैंने उसको medicines. कम्प्लीटली बैलेंस, Right. उसमें मैंने शुगर बिल्कुल कट डाउन कर दिया। देयर इज नो शुगर। चाय लेता था तो चाय के अंदर कोई शुगर नहीं लेता था। खाना भी मैं लेता था तो उसके अंदर भी वही मैं फॉलो करता था जो मेरा हेल्थ कोच भी देता था। सो नो जंक Hmm. फूड, नो फ्राइड फूड्स, नथिंग, सब कुछ स्टॉप। 3 महीने के Great. बाद जब मेरा 13 से 6.1 मेरा जब आया, तो देन हेल्थ कोच से मैंने बात करके आई स्टार्टेड सम एक्सपेरिमेंट्स। लाइक मैं थोड़ा सा राइस वापस से लेना शुरू कर लिया मैंने, राइट, बिकॉज आई वाज यूज्ड टू हैविंग राइस एंड चपातीस। Hmm. मेरे को क्रेविंग्स होती थी बहुत ज़्यादा कि मैं थोड़ा अच्छे से खाऊं उसको। बट मैं फिर भी मॉडरेशन में मैंने चीज़ें शुरू की, फ्रूट्स में भी एंड वेजिटेबल्स वगैरह में भी। आ, अब मैंने जो मैं पहले खाता था मैं वही खाता था, बट उसमें बहुत सारी चीजें मैंने चेंजेस किए, लाइक फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन Right. रिकमेंडेशन ऑफ माय हेल्थ कोच। जैसे ऑयल मैंने बहुत कम कर दिया सब फूड्स में। और दोपहर में अगर मैं राइस खाता था तो रात को मैं दलिया खा लेता था काउंटर करने के लिए, कि वो कार्ब मेरा इंटेक थोड़ा सा मेंटेन रहे मेरा। और दलिया वगैरह में भी जो दलिया उपमा बनाता था या वैसे, तो उसके अंदर मैं कुछ भी ऑयली वगैरह कम प्रेफर करता था। और उसके अंदर सिमिलरली सुबह मॉर्निंग में अगर मैं डोसा खाता था पहले, डोसा की जगह पे मैं रागी डोसा या रागी ओट्स डोसा इस तरह से किया। तो मेरे को फील ही नहीं होता था कि मैंने कुछ बहुत मेजर चेंज किया है, क्योंकि मुझे Correct. खाने खाते वक्त वही मिल रहा है, मुझे बेसिकली डोसा ही मिल रहा है। Hmm. Hmm. पर द ओनली थिंग इज द इंग्रेडिएंट्स आपका डिफरेंट हो गया। दोपहर में मैं राइस कम लेता था और वेजिटेबल्स ज्यादा लेता था, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिल जाता था। सो मुझे इसलिए बहुत ज्यादा क्रेविंग होता रहता। हाँ, वो जंक फूड्स को लेके क्रेविंग कभी कभी होता था, तो वंस इन अ मंथ में कभी भी जाके कुछ जंक फूड खा लेता हूँ मैं। तो आई हैव नॉट स्टॉप दैट। तो मैं वंस इन अ मंथ एक मैंने बना लिया कि एक बार जाके तो यार कुछ ना कुछ खाऊंगा, जिससे कि मेरा वो भी सेटिस्फेक्शन भी रहेगा। Great. Once again, for all our users, 25 kgs weight loss, 13% to 6% A1C at an age of 47. Uh, for a person who's 24/7 busy with home responsibilities, personal challenges, and professional work as well. If he can do it, I'm sure each one of you can absolutely do it. All right, moving ahead, Mr. Gopinath. I'm sure your doctor must be shocked and very happy after you went to him with that 25 kg weight loss and reduced your A1C almost 80% than what it was. What was the response of the doctor after you met him, after you achieved all this? So he was very happy actually, वो काफी खुश थे मेरे प्रोग्रेस से। एंड उन्होंने ये भी बताया कि मैं उनको उम्मीद नहीं था कि मैं अपने इस लाइफ में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन ले पाऊंगा। बिकॉज व्हेन आई वेंट टू हिम आफ्टर अ ईयर, क्योंकि वो मुझे काफी पहले से भी जानते थे, तो मैं उनको ये लगता था कि मैं शायद चेंज नहीं होने वाला। बिकॉज Hmm. आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ जंक फूड्स। उनको भी पता है कि मैं पार्टीज भी बहुत करता हूँ। आई एम होल्डिंग ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन माय कंपनी, तो वर्कलोड भी मेरा बहुत रहता है, तो मैं ये प्रॉब्लम्स बताता रहता था। बट ही वॉज वेरी वेरी शॉक व्हेन आई वेंट टू हिम आफ्टर जस्ट 3 मंथ्स टाइम, जहाँ पे मेरा 13 से मेरा जो पहली बार मेरी रीडिंग आई थी, दैट वाज 6.1, और मेरा 89 से मेरा 80 किलोस पहुंच गया था मेरा वेट। सो 9 किलोस इन 3 मंथ्स टाइम इन द बिगिनिंग, एंड 13 से 6.1 पहुंचना, इट वाज ए वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर हिम। और उन्होंने ये बताया कि मैंने, कहते बहुत कम लोगों को देखा है ये जो कि इतने अचीवमेंट को अचीव कर पाए। सो ही सेड कि ये कंटिन्यू करोगे कि आप इसको अब लाइटली लोगे, क्या क्या इरादा है?
मैंने कहा यार ऑफ कोर्स मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो अब मेरे को और मोटिवेशन है कि आई विल ट्राई टू रिड्यूस इट मोर एंड कंप्लीटली गेट इट डन विद इट. सो उन्होंने मेरा मेडिकेशन थोड़ा सा रिड्यूस किया उस टाइम पे. देन अगेन आफ्टर 3 months टाइम, थिंक द मंथ ऑफ जनवरी, मेरा 6.1 से HbA1c मेरा 5.8 पहुंचा. वेट अगेन आई लॉस्ट 5 kilos. सो ओवरऑल मेरा 14 kilos का रिडक्शन हुआ था 6 महीने में. और उसके बाद फिर मैंने बाकी चीज़ें जब चेक की, क्या SGPT, SGOT, HDL, LDL, क्रिएटिन, सब कुछ ट्रैक पे आ गया. विच आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि खाली मेरा शुगर कम नहीं हुआ, मेरा बाकी सारे पैरामीटर भी मेरे ठीक हुए. तो अगेन डॉक्टर ने थोड़ा सा रिडक्शन दिया वहाँ पे, एंड ही आस्क्ड मी टू कंटिन्यू फॉर अनदर 3 months एंड कम बैक. फिर अगेन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो जब मेरे ऑलमोस्ट लाइक 9 महीने, शायद 9 महीने पूरे हुए मेरे, मेरे HbA1c केम टू 5.5. और मेरा वेट अगेन 5 kilos और रिड्यूस किया. और यहाँ पे अगेन ही वॉज वेरी हैप्पी कि बोला कि यार यहाँ तक बहुत अच्छा किया तुमने. नाउ ही सेड मी, टोल्ड मी कि मेडिसिन अभी भी थोड़ा सा कंटिन्यू करो, डोंट स्टॉप इट. बट हाँ, लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे कंटिन्यू रहेगा तो यू कैन स्टॉप इट कम्प्लीटली आफ्टर मे बी लाइक 3 months. But he said ki this weight loss from 93 kg to almost like 69, 70, it is absolutely, it is something which is commendable. But उन्होंने बोला 70 के नीचे मत जाओ, because you will not start looking the way you are looking right now. तो आप इसको इसी पे मेंटेन करो, और अपना लाइफस्टाइल जो आपने मेंटेन किया है, रूटीन मेंटेन किया है, डाइट को लेके सब कुछ, you continue with that. That will be really good. Absolutely. I think that's a great thing, and maintenance is as important as reduction. So we need to ensure we maintain it ahead. I'm sure you can come back as the highest achiever with a lot more good health, a lot more younger looking Mr. Gopinath, and a lot more motivation and suggestions for all our users. Uh, Before we complete today's conversation, Mr. Gopinath, I would love to know that what are these five best things you will address to everyone who's a part of today's session so that they themselves can start with these five changes which you adapted and that gave you very good results. Sure. तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि अपने आप पर बिलीव करो. लाइक अगर हम डायबिटीज से हमारा डायग्नोस होता है तो इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो सबसे पहले तो अपने आप को ये बिलीव करो कि यू कैन रिवर्स इट. और वो रिवर्स हो जाता है इफ़ यू स्टार्ट मेकिंग दीज चेंजेस इन योर लाइफ. सबसे पहले द लाइफ स्टाइल चेंज. अपना एक्सरसाइज रूटीन इस तरह से बनाओ, बेस्ड ऑन योर वर्कलोड एंड एवरीथिंग, इस तरह से बनाओ कि आप उसको प्रॉपरली फॉलो करो. अब ऐसे भी मत बनाओ एक्सरसाइज रूटीन कि आप उसको फॉलो ही ना कर पाओ, एक दिन करो अगले दिन मत करो, ऐसे पॉसिबल नहीं है. सो इफ यू आर डूइंग इट ऑन ए वीकडे, तो आप वीकेंड पे भी करना पड़ेगा वो चीज़. तो मेरा अपना ये है कि मेरा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मैं हर दिन सुबह 5 बजे एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ मॉर्निंग में. वो 1 घंटा 2 घंटा जो मैं एक्सरसाइज करता हूँ वो मैं रोज करता हूँ, इरस्पेक्टिव ऑफ मुझे शाम को शायद टाइम मिले ना मिले. सो मेरे को ये होता है कि मेरे को अपने वो 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं एज पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज. वो मेरा सबसे पहला फोकस रहता है. तो इट शुड बी फोकस फॉर एवरीवन कि इतना तो करो कम से कम, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप अपने बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे एक्सरसाइज करके, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपका बॉडी आपको रिस्पेक्ट करेगा. सेकेंडली, डेली शेड्यूल मेंटेन करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि आपका वर्क टाइम, आपका स्लीप टाइम, आपका रिलैक्सेशन टाइम, थोड़ा सा उसको मैनेज Right. करो. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम आ, आ, अपने फैमिली को टाइम नहीं देंगे, अगर हम प्रॉपरली उनके साथ टाइम नहीं बिताएंगे, और हम अपने लिए भी टाइम नहीं दे पाएंगे अपने आप को समझने के लिए, सो वो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहोगे और स्ट्रेस रहोगे हमेशा. और वो कभी भी आपको हेल्प नहीं करने वाला, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी डाइट प्लान फॉलो कर लो. सो वो आपको मेंटली भी अपने आप को खुश रखना है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. आप अपने वर्क टाइम को मैनेज मैनेज करोगे प्रॉपरली, आपका रिलैक्सेशन टाइम अगर आपका अच्छा रहेगा, और आप टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे, तो ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा इसके लिए. और सेकंड एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट इज डाइट. आपका डाइट आपको बहुत रिलीजियसली फॉलो करने की जरूरत है. उसमें देयर कैन बी सम चीट डेज, बट डेफिनेटली आई वुड से कि आप फॉलो कीजिए अपने हेल्थ कोच को, जो कि आपको अच्छे से डाइट बताएंगे, आपके होमली, आपके तरीके से, आपको जो चाहिए, आपके 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 जहाँ को बिलोंग करते हो उस हिसाब से भी आपको मिल जाएगा डाइट प्लान यहाँ पे. सो वो सबको फॉलो करोगे तो इट इज़ वेरी वेरी नाइस. वो काफ़ी हेल्प करेगा, आपके एक्सरसाइज के साथ में हेल्प करेगा कि आपका वेट रिड्यूस करने में और आपका शुगर लेवल मेंटेन करने में. फोर्थ वन इज मेडिसिन. जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, यू शुड फॉलो इट रिलीजियसली. तो उसको आप मिस मत करो.
You should follow the advice of doctor. If you have questions, you ask the questions from the doctor और उसको क्लैरिफाई करो, बट फॉलो करो. अगर आप छोड़ दोगे उसको या मिस कर दोगे तो देन इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. तो आपका एक्सरसाइज और आपका डाइट सब कुछ वेस्ट है. सो ये तीनों चीजें हैंड इन हैंड चलेंगी. आपका हेल्थ, आपका डाइट, आपका एक्सरसाइज, आपका डॉक्टर का एडवाइस और मेडिकेशन, ये सब आपका हैंड इन हैंड चलने वाला. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपने फैमिली मेंबर्स को हमेशा आप प्रोग्रेस में उनको इन्वॉल्व करो. आप वेट चेक करते हो तो वेट भी दिखाओ उनको कि मेरा वेट रिड्यूस हुआ है. आपका शुगर लेवल रीडिंग्स लेते हो तो इफ देयर इज अ गुड रीडिंग कमिंग, आप उनको बताओ. सो दे आल्सो फील मोटिवेटेड. और वो आपको भी, वो जब फील मोटिवेटेड है, व्हेन दे आर फीलिंग हैप्पी, यू फील हैप्पी. सो दैट इज a very good thing that I have felt, in my life. In the last 9 months, I'm feeling more attached to my family members now, because they have been part and parcel of my problems. और उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया. Even my parents who are in Kerala, they supported me a lot. Even remotely also, वो मुझे calls करते हैं weekly ones. So they feel very happy that कि I have improved so much. I've come to a stage wherein मैं medications को शायद बंद कर सकता हूँ. But they're very happy. At the same time, तो केरला की एक mentality है कि वेट बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है तो यार इट्स नॉट लुकिंग गुड. तो मैंने बोला कि यार ये वो सब माइंडसेट पुराना है. आई फील वेरी हैप्पी अबाउट मी दैट कि मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया अपने में, माय फैमिली, एंटायर फैमिली इज हैप्पी, सो यू शुड आल्सो बी हैप्पी. सो प्लीज इसको आप दिमाग से निकाल दो. So forget about what relatives say, but this is what I am and I want to be. So that is how it is. These 5 6 I think advices everyone should follow. And अगर आप इसमें से कुछ भी follow कर लोगे, अगर आप 50 60% भी follow कर लोगे, it will bring massive transformation in your life. Avriti, I hope that Absolutely. answers. Yeah. Thank you so much, Mr. Gopinath. I'm sure it's not just me, my entire team, but our entire Active Wealthy family who feel happy and motivated after listening to you. Thank you so much for joining us today. Let's go through some questions. Hello, hi, good evening, Mr. Chakravarti. Thank you so much for being an active participant today. So, Mr. Gopinath, Mr. Chakravarti wants to know, did you have diabetes because of ancestor connection, genetic issue, or was it because of unhealthy eating, stress related concerns, or disturbed lifestyle? I think it is both. मेरे family में भी है, इस family history में भी है मेरे. My mother is diabetic. My father is like he's okay now. He was at a stage he was also diabetic, but now he, because of all the healthy living, he has started improving. And अभी उनका नहीं है कुछ भी, पर mother का मेरा है. एंड अदर देन दैट मेरा लाइफस्टाइल को लेके मैं ज़्यादा ब्लेम करूँगा यहाँ पे, बिकॉज मुझे फील हुआ है कि मैं, मेरे पास मौका था इसको रिवर्स करने का, बट मैंने उसको यूज़ नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया. सो हेरिडिटरी वाज देयर, बट लाइफस्टाइल को ज़्यादा ब्लेम करूँगा यहाँ पे. Great. Thank you for answering that. He also is asking how many months you took to reduce from 13 to 6% A1C, and did you take insulin at that time? And what are your current tablets? What is the dosage? या सो तो पहला जो है आपका क्वेश्चन का जवाब ये है कि 13 से 6.1 में 3 मंथ्स में लेके आ गया था, बिकॉज आई डिड लॉट ऑफ वर्कआउट, डाइट प्लान को भी फॉलो कर रहा था, तो मेरा बहुत ड्रास्टिक रिड्यूस हुआ था. मैं वेट ऑल्सो रिड्यूस फ्रॉम 93 से 89, 89 से 80 मेरा पहुंच गया था मैंने. सो बाकी सब भी मेरे नॉर्मल हो गए थे, एस जी पी टी, एस जी ओ टी, एच डी एम वगैरह से. सो ये एक ड्रास्टिक चेंज आया था, जो मैं 3 महीने में मैंने अकम्प्लिश किया था. सो व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन? इंसुलिन से टैबलेट्स कितने Yes. कम हुए हैं? व्हाट्स करंट डोसेज? या सो इंसुलिन मैंने हार्डली 20 या 25 डेज के लिए मैंने लिया था स्टार्टिंग में. आफ्टर दैट व्हेन आई वाज चेकिंग माय शुगर लेवल, तो वो शुगर लेवल मेरा नीचे चला जाने लग गया था ऑलमोस्ट, लाइक इट वाज इन 90s रेंज. तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि अभी आप इसको रोक दो इंसुलिन को, एंड कंटिन्यू विद द मेडिसिंस ही प्रिस्क्राइब. So medicines was a high dosage medicines which was given to me in the beginning, because उनको वो मेरा शुगर बहुत नीचे लेके आना था, because my sugar was like, जो पोस्ट शुगर था वो मेरा 525 टच कर गया था, और जब फास्टिंग था मेरा 300 से ऊपर था, 325 350 मेरा पहुंच गया था. सो ही सेड कि भैया अगले 3 महीने के लिए तो यही मेडिकेशन चलेगा. और इंसुलिन भी मुझे 3 महीने के लिए बोल रहे थे, बट मैं 20 25 डेज में मैंने काफी अपने आप को वो कर लिया था, एक्सरसाइज वगैरह करके एंड डाइट प्लान फॉलो करके.
कि मैंने उन्होंने मेरा इंसुलिन रोक दिया और मेरा मेडिकेशन कंटिन्यू रखा फॉर 3 मंथ्स, वो जो मेजर मेडिसिन। Great. Okay. Hello, Sandeep ji. Good evening. Thank you for joining today's session. Your active participation is appreciated. So, Mr. Gopinath, Sandeep ji wants to know your sleeping routine and how many hours did you sleep and how did you manage sleep? या सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो मेरा स्लीप रूटीन अभी ऐसा है कि मैं रात को 9 अपने लाइक आई हैव माई डिनर एट अराउंड 7:45 और 8 p.m. मैं तब तक 8:15 तक मैं अपना डिनर निपटा लेता हूँ। देन घर का थोड़ा बहुत काम करके आई हिट द बेड बाय मैक्स 9:30 p.m. इन द नाइट एंड आई वेक अप एट 4:30 a.m. इन द मॉर्निंग। सो मेरा फिक्स रहता है कि मैं 9:30 से पहले, मतलब 9 o'clock भी कभी कभी मैं बेड आई हिट द बेड, बट 9:30 मैक्स। उसके बियॉन्ड मैं कोशिश में जाता ही नहीं हूँ। 9:30 में सोते सुबह 4:30 उठता हूँ। दैट इज माई रूटीन। Great. That needs a lot of dedication. And great to hear that, Gopinath ji. We have Mr. Manav. Hello, good evening, Manav ji. कैसे हैं आप? Happy to see you after a long time today. So Manav ji is asking, he actually appreciates you for sharing your experience truthfully. And he's asking, how long have you been diabetic? And when was the first time you were diagnosed with hypoglycemia? That means diabetes. सो एज आई सेड, 9 महीने पहले ही मुझे पता चला था मैं डायबिटिक हूँ, बट एक्चुअल में जब HbA1c 13 देखा, तो डॉक्टर ने बोला कि आप कम से कम नहीं तो 1 डेढ़ साल पहले या 2 3 साल से आपको डायबिटीज है। मैंने इनको बताया कि मैंने उससे 1 साल पहले जब चेक किया था, तो इट वाज इन दी बॉर्डर लाइन। मेरा उस वक्त मेरा जो HbA1c था, दैट वाज अराउंड 5.6 या 5.8 कुछ था। तो उन्होंने बोला कि आपको बॉर्डर लाइन है। दैट वाज इन ईयर 2021। सो 2021 Mhm. तक तो मुझे पता है कि मेरा बॉर्डर लाइन था। तो मेरे को मोस्ट Right. 2021 के बाद ही शुरू हुआ। उन दौरान कोविड का भी चल रहा था, तो आई वाज कंप्लीटली एट होम। मैं पूरा आ, घर पे ही बैठा रहता था, पूरे दिन काम करता रहता था, बस लाइक दैट। Right. तो मान के चलो कि मुझे शायद 2 साल से होगा। एंड जुलाई 2022 में मेरा डायग्नोस हुआ था, जब मैंने टेस्ट कराया था अपना, जिसमें मेरा 13 HbA1c निकला था। सो इट्स बीन 9 months फ्रॉम Correct. So दैट, roughly 2 years. रफली 2 years। Yes. Great. Okay. Sunita ji, कैसी हैं आप? Thank you so much for joining today's session. So Sunita ji is asking you if you can give us your daily routine or your diet plan. So let me answer this on Mr. Harish's behalf. So आपके लिए अलग डाइट प्लान होगा आपके वजन, आपके ब्लड शुगर, आपके A1C के हिसाब से, बट डेफिनेटली क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा है, तो हम इन जनरल गोपीनाथ जी से ये इन्फॉर्मेशन जानेंगे. हाउ इज दिस डाइट प्लान? यस. So it's about diet or it's about the routine? रूटीन एंड डाइट. So routine, as I said, मेरा रूटीन मेरा अगर मैं बताऊँ तो सुबह जैसे when I start my day like 4:30 को, तो I have my uh, typically warm water के साथ में I have different like seeds and all, nuts वगैरह भी मैं ले लेता हूँ because that is required before exercise. उसके बाद आई यूज्ड टू गो फॉर द एक्सरसाइज, जहाँ पे मैं सिर्फ वॉक करता हूँ। मैं कुछ और ड्रामा नहीं करता हूँ। आई ओनली गो फॉर वॉक एंड आई डू अ ब्रिस्क वॉक फॉर एटलीस्ट 1 hour इन द मॉर्निंग। और उसके बाद मैं फिर वापस आके मैं 1 घंटा अराउंड प्राणायाम या योगा वगैरह का वो करता हूँ। एंड पोस्ट दैट आई हैव माई ब्रेकफास्ट। तो वो ब्रेकफास्ट के अंदर आई हैव what is consulted, what is advised by my health coach. So anything which is high, in fiber or protein sort of, वो मैं prefer करता हूँ वहाँ पे। Then in the mid afternoon I have a light snacks, or in lunch time I have a proper lunch with again based on the recommendation from health coach. और शाम में मैं I have some light snacks and then I go for a walk again. वन 1.5 hours का वॉक मैं शाम को भी कर लेता हूँ when I am back from the office. और उसके अंदर मैं बेसिकली आई इंश्योर कि मैं सुबह अगर 10,000 स्टेप्स चलाऊँ, तो शाम को मैं कम से कम 5,000 या 6,000 स्टेप्स कवर कर दूँ, तो जिससे कि 15,000 to 20,000 स्टेप्स का मैं पूरा ओवरऑल डे में कवर कर दूँगा उसमें। सो आई यूज अ बैंड ऑल्सो फॉर दैट, बिकॉज ऑफ विच आई कैन ट्रैक दैट, and in the app also I can get the readings. Okay? And ग्रेट. after taking a shower and all in the evening, I have my dinner at around 7:45 8 p.m.
And post that, Mm-hmm. I after the dinner, I stroll in the house only for 10-15 minutes just to digest. और रात को उसके बाद मैं अपना 9:30 बजे I pack it up, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ, and then I go to sleep. Okay. So this is the Great. Thank you so much for sharing that. I think very simple routine. sure. If you follow every single meal, every single timing, it is very easy to have a standard routine. If you want to create your individual routine, please speak to your health coach. He can help you formulate that as per your current routine. तो जरूरी नहीं है क्योंकि गोपीनाथ जी 4 बजे 5 बजे उठ रहे हैं तो आपको भी उठना है. If you have a different working routine, if you have night shifts, if you are a homemaker, if you have kids to take care of, your routine can be different. So don't worry. Customized planned routine can be designed for you as a part of AccuCheck Wealthy. All you need to do is speak to your coach. All right. With this, I am very happy to have this conversation with you, Mr. Gopinath. Thank you so much. It not only motivates the AccuCheck Wealthy users, but also me and my internal team who keep working day and night to give the best possible experience to all our users so that we can personalize your journey. Thank you so much for sharing your feedback, your insights, and your entire journey of 9 months with us. You have been the highest achiever for the year, for the month April 2023. Once again, 25 kgs weight loss, drastic reduction of 7 plus percent of A1C in just 9 months. Only two factors help: dedication and adherence. I'm sure if all of us at least have 50% of both of these, we also can work on our health. Let's start this from today. Speak to your coaches and formulate your personalized journey. All those who are already on a paid plan, किस बात की देरी है, अपने कोच से बात करो. Who are willing to buy the program, please drop in a message in the chat box to your current sales coach and she will connect with you and guide you for the next process. Meanwhile, thank you so much, Mr. Gopinath, for sharing your insights. I am overwhelmed to know all this information about my team, our way of connecting with the users, and the overall experience we build. Thank you so much once again. For all our AccuCheck Wealthy family, we are coming next week with a special session. Don't forget to get your yoga mats because I'm getting a special yoga expert for you next week, live Saturday, 6 p.m. Mr. Gopinath, any last words for our members? I think as I said, just believe in yourself. I think rest everything will be taken care of. So all the best to all of you in this journey, and wish you become non-diabetic as soon as possible. So wishes. Great. I think a very important message today: believe in yourself, only then you can do it. If we all adhere to it, I'm sure we will reach a new set of health target for each one of us. Till then, take care of your health, have a happy weekend, and see you all next week. Bye bye. Bye bye. Thank you, Vitija. Thank you, everyone. Thank you. Bye.